discussion and the interaction is on the E20 ethanol blended petrol program. This ethanol blending in petrol has been not done overnight. It is a measured, scientifically driven, step-by-step process. In 2013 and 14, we were blending about 1.5% ethanol in gasoline. And this program was targeted to have 20% blending, which is E20, which was completed in December 25, 5 years ahead of the target. This program, the ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and deliberation by all stakeholders. It is supported by scientific evidence, extensive testing by the automotive manufacturers and the agencies who support them, namely the Automotive Research Association of India, ARAI, and SIAM. And also it is in line with the global best practices, which is followed to green the fossil fuels to lower the carbon emissions. There have been diversification in the sources to produce this ethanol, which has led to the reduction of crude import. And if you have seen the West Asia crisis, which we overcame, some part of the vulnerability was reduced by reduction of crude import equivalent to the 20% gasoline, which was made available to all the customers across the country. So with this, also, you may note that there are some pointers which have been released by the Ministry of Petroleum and Natural Gas, which concern the use of water in the production of ethanol, as also the value of production of ethanol, which goes into blending, plus the capacity of ethanol production in the country. There are several countries across the globe, Canada, US, Brazil, Paraguay, Germany, who have used ethanol in various blends for several years. It is pertinent to note that since E20 ethanol has 80% of gasoline, which is fossil fuel, the main characteristic of the fuel is still fossil-based, which is gasoline. The specifications are well structured in terms of its compliance to BIS standard, IS 17021, published in 2018. Again, these standards are a result of a dialogue between various scientific agencies, experts, and extensive testing. And all ethanol-based gasoline, E20 gasoline, which is spread across the country now in all retail outlets, 77,000 plus of them all across the country, have uniformly adopted the specifications, which is compliant to meeting the emission standards for BS6, as well as several other specifications which regulate the engine performance in terms of higher RON, compliant sulfur, and water content, which is compliant to meeting the requirement of engine performance. So this is a summary of the few points of the E20 program of the Government of India, which has now made us less reliant on 100% import of crude towards production of gasoline. Thank you, Vartika ji. Now I request Mr. Vikram Gulati to make some. Good afternoon. Good afternoon to all. So
Just want to add to what's been said. The automotive industry is amongst few industries that is, very strongly regulated in terms of quality and performance. We have stringent norms for vehicles to meet emissions, safety, performance, etc. And like mentioned, fuel side also, there are very clear specifications. It's not only the OEMs who are producing these vehicles, which test them very elaborately, but also when you introduce a vehicle, these have to be tested, certified, homologated, and then introduced. And now with newer norms, there is intermittent, again, certification by bringing some of the on-road vehicles back and testing them. So as what the point I'm trying to make is the vehicles that are made available to consumers are extremely well engineered, well designed, and have a very immense element of oversight and through very technically sound testing agencies which are independent. Now, the second point I'd like to briefly make is to set the context. Ethanol is a very good fuel. Its RON is much higher, therefore very good drivability. And it's nothing new. In fact, I was also surprised to know that initially in early 1900s, when the new automobiles started to roll out, it was ethanol that was used. And another fact is that its performance is so good that it is used in Formula One racing cars. So the fuel itself is very good from a performance point of view, acceleration, RON element, but it's also clean fuel. In an era when we are facing the issue of climate change and are looking at rapidly decarbonizing, this is a zero carbon fuel because it's derived from plants. None of the carbon emitted by when you use this fuel is under the ground. It's all over the ground, which is recycled. That makes it extremely good for not only use now, but for our coming generations, because we are avoiding so much of carbon emissions, which has adverse impact on our society and the generations to come. Last point I'd like to make before I hand it over is just look what happened 2-3 months back. I think it was a wake-up call and an extremely strong reminder of the vulnerability we face because of energy being imported. We're not being energy self-reliant. And in this tough time when energy, not only the energy prices, the fossil fuel prices, but crude availability itself became an issue. So I think with 20% mixing being in place, a lot of that helped to mitigate the impact not only on the economy, but also on the pockets of the consumers. So with these points, I'd like to hand it back. Thank you. Thank you, Gulati ji. Now I'd request Mr. Rahul Bharti to make it. Thank you, and thanks for inviting me to this forum, where it gives me an opportunity for Maruti Suzuki to utilize this opportunity to reach out to all customers in the country and give a statement of confidence. Over the previous few days, we've heard that there are some doubts or queries or concerns on usage of ethanol in cars. India mandated E20 from 2023 for material compliance, and before that it was E10. Obviously, after 2023, both the cars and the fuel are mandated for E20, so that is not a cause of concern. If I understand well, the cause of concern is what happens if on the cars that have been sold before 2023, manufactured and sold before 2023, if which was primarily designed for E10, what if E20 fuel is used on them? That's probably the central question which needs to be addressed. As Mr. Gulati said, the industry is very robust in design, testing, validation, certification, and even post-certification
checking conformity of production through the life of the model. And in that design methodology, let me mention to you that we have sufficient factors of safety that take care that there is no problem in terms of wear and tear, corrosion, or damage to the life of the car or the parts that come in contact with the E20 fuel if E20 is used on cars that were produced and sold in India before 2023. As a manufacturer, we have tested E10 cars which were prevalent before 2023 on E20 fuel for all parameters, and we have not found anything of concern. That's a statement of confidence that I want to give you. And of course, we are here to address questions also. Thank you. I would request Mr. Ashutosh Verma to make his mark. So I was just saying that we are the world's largest two-wheeler manufacturer. We sell over 6 million bikes in a year. We know our responsibility that we have towards our customers. All our vehicles are extensively tested. We analyze crores of service data that we have. And basis all the analysis that we have done, there is no incidence whatsoever of any higher damage with vehicles that run on E20 than the vehicles that were running on fuels prior to E20. So we're here to dispel all these concerns. Happy to answer questions as they come our way. All right, thank you everyone. So now we'll begin with the questions. First row. Please give the mics, please. हेलो मैम, मैं अमलेंदु हूँ। ये इथेनॉल का कितने व्हीकल पे और कब टेस्टिंग किया गया, रिसर्च किया गया जो इससे नुकसान नहीं होगा? मैं पीयूष पांडे हूँ, TV9 भारतवर्ष से। जैसा कि BPCL के एक ऑफिशियल की तरफ से भी ये सामने आया कि माइलेज कम हो जाता है E20 में, और इससे पहले नीति आयोग की एक रिपोर्ट में भी इसका हवाला दिया गया था। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या वाकई माइलेज कम हो जाता है, और अगर कम हो जाता है तो कितना कम हो जाता है? क्या पहले कोई रिसर्च की गई थी? एक और सवाल है मेरा कि क्या ये दावे सही हैं कि E20 पेट्रोल से वाहनों के इंजन या पुर्जों में कोई भी खामी आती है? जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि कोई बड़ा डैमेज नहीं देखा गया, तो क्या कोई छोटा डैमेज देखा गया? और इसके अलावा एक दावा इसमें यह भी किया जा रहा है कि जो पेट्रोल टंकी होती है उसमें खास तौर पर एथेनॉल डालने की वजह से सीपेज की तरह से वहां पर एक लेयर जम जाती है और वो फिर हटती नहीं है और उसकी वजह से गाड़ी खराब हो जाती है। तो मैं पहले तो एक सवाल पूछना चाह रहा था कि ये जो डिबेट अब चल रहा है कि E20 आज ऐसा नहीं कि आज पहली बार आया है, जैसे आप लोगों ने कहा बहुत दिन से हुआ है, बट अक्रॉस द कंट्री ये 2025 में लागू हुआ। तो देखा जाए तो क्या आप लोगों को इंडस्ट्री ये चाहता है कि कम से कम E20 में आप यहीं रुके बात, और कम से कम 10 साल 15 साल का सरकार एक अनाउंसमेंट करे कि हम इसके बाद और मैंडेटरी 10 साल तक नहीं करेंगे, ताकि जो लोग अभी गाड़ी खरीदने वाले हैं या खरीद रहे हैं उनको एक क्लियर मैसेज जाए। दूसरा सवाल मेरा राहुल भारती सर से, आपने कहा कि आपने सारा टेस्ट किया, आपको पता लगा कोई गड़बड़ नहीं है, फिर आप लोगों ने किट क्यों एक बनाई थी जो 6,000 रुपए का, जो E20 का अपग्रेडेशन को हेल्प करेगा? एंड थर्ड क्वेश्चन अबाउट ARAI, what everyone says that it's an independent entity, we all know it is funded by automobile companies and also by government. So how can it be an independent agency? People will obviously doubt whatever government or private entity wants, they give such results. Second row. Yeah, 195. here. Yeah. I am Prabhu Datta from Business Line. राहुल जी से एक सवाल है कि आपने ये बताया कि जो 2023 में 20% ब्लेंडिंग पे कंप्लाइंट कर दिया बाकी गाड़ी का, और इसमें ज़्यादा जो पुराने 23 से पहले की जो मैक है उन सब में भी E20 अगर फ्यूल डालने से कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आप पोस्ट फैक्टो गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं। आज के डेट में आप बता सकते हैं जो आज की गाड़ी है
ये कितना कंप्लाइंट है? कल को गवर्नमेंट बोलेगा E25 लेके आएंगे, फिर आप 2 साल बाद बोलेंगे हाँ ये 25 भी कंप्लाइंट है। आपकी गाड़ी आज के डेट में नॉर्मल गाड़ी कितना कंप्लाइंट है हम जानना चाहेंगे, बाद में नहीं, डिफेंड करने वाला चीज नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन है, अगर सारी गाड़ी सब कुछ इथेनॉल पे सब कुछ ठीक है तो इसको फ्रीडम क्यों नहीं दिया जाए गवर्नमेंट पब्लिक को, जिसको कि नेशनल इंटरेस्ट पे 100% इथेनॉल डालना चाहे वो डाले अपनी रिस्क पे, उसके ऊपर फ्रीडम क्यों नहीं दे देते हो आप? Second row, 194. Good afternoon, Saptaparna Ghosh from The Hindu. Just wanted to ask, I mean, I could stand to correction here as well, but the initial E20 testing that was done, I mean, we've had conclusions that it was done about 40,000 kilometers across two-wheelers and four-wheelers. The report, has it not been made public as yet for further scrutiny? I mean, that would happen in any other legislation, that it goes through a consultation and then for public scrutiny as well. So has the report not been made public as yet? And if we, I mean, is there any way we can actually access that report? And other than that, there have been news reports about the ARAI testing for E25 as well. Is there any, substance to it? If you could please get some perspective. Thank you. At the back, 80-140. विक्रम सर से मेरा सवाल है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है आपके कंपनी की एक गाड़ी खराब हो गई इथेनॉल के इस्तेमाल की वजह से, और कहा जा रहा है कि आपकी कंपनी उस पे पैसे रिफंड नहीं कर रही या बनाने के लिए तैयार नहीं है, उसको वारंटी यानी नहीं दे रही है। 71 also. मेरा सवाल सभी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से है इसमें कि सरकार ने अभी जो विंटर सेशन था पार्लियामेंट का, उसमें अपने जवाब में ये कहा था कि जो 2023 से पहले की गाड़ियां हैं वो E20 कंप्लायंस नहीं है। तो क्या ऐसे में अगर 2023 से पहले की गाड़ियों में अगर E20 कंप्लायंस अगर ये पेट्रोल डाला जाता है तो क्या इससे नुकसान होगा या नहीं होगा? 139. मेरा सवाल राहुल सर से है। जैसा अभी आपने खुद बताया कि 2023 से पहले E10 पर गाड़ियां चलती थी, तो 2023 से पहले वाली जो गाड़ियां हैं उनमें अगर E20 तेल पड़ता है तो उसके क्या कोई नुकसान है या कुछ इस तरीके का आप लोगों ने रिसर्च किया है कि उस पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है? 71. अच्छा, okay, please go ahead. My question is for everyone. My name is Arun Dhanta from CNN News 18. We are seeing so many videos on social media. People are putting out their facing cries. Are these videos reaching to you? And I want to ask everybody, how many such issues have reached to your level where people are facing problems? Or would you call it some sort of a campaign against this E20 fuel which is running? हेलो, मेरा नाम कमलेश है। मैंने सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें देखी जिसमें कि ये देखा गया है कई वाहन चालक जो इथेनॉल मिक्स चला रहे हैं, उनके पेट्रोल पंप पर पेट्रोल जो इंजन होता है उसके सामने चीटियां लगी हुई थी। क्या इथेनॉल मिक्स, क्या इस तरह का प्रभाव पड़ता है क्या इस पर? We can 79. मेरा नाम सुमंत है, मैं जी न्यूज़ से हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, चाहे जितनी भी कंपनी की गाड़ियां हैं, मारुति है, हुंडई है या टोयोटा, जो गाड़ियां अभी सड़कों पे दौड़ रही है, क्या इनके इंजन और या पार्ट्स E20 इनेबल्ड हैं? और अगर ये है तो इतनी जो शिकायतें अलग अलग गाड़ियों में आ रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं या कंपनियों के पास कुछ शिकायतें पहुंची हैं? Okay, 47, 280, 51, 272. मेरा सवाल XP95 या जो हायर ऑक्टेन पेट्रोल होता है उसको लेकर है। जो देश में टर्बो इंजन्स वाली गाड़ियां चल रही हैं उनको जनरली ऐसा माना गया है कि उनको हायर ऑक्टेन वाले पेट्रोल की जरूरत होती है, RON ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन जो E20 है उसको लेकर तमाम जैसे फॉक्सवैगन हो गया, स्कोडा हो गया या जो भी जर्मन गाड़ियां हैं उनमें शिकायत ये आ रही है, वर्कशॉप ये कह रहा है कि जो हमारी E20 की क्वालिटी है पेट्रोल की वो खराब है, इस वजह से इंजन में मॉइस्चर आ रहा है और वो खराब हो रहा है। तो पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि भूटान ने ये मना किया है कि हम भारत से E20 जो ब्लेंड पेट्रोल है वो हम नहीं लेंगे।
और ये वहाँ से बात आई है। तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी है जो भी है, तो हमारी जो स्टोरेज है वो कंपेटेबल नहीं है E20 के लिए, क्योंकि थोड़ा भी मॉइस्चर जाएगा तो E20 फ्यूल उससे खराब होता है। तो क्या भारत के सभी पेट्रोल पंप जो स्टोरेज कर रहे हैं वो E20 को स्टोरेज करने के लिए कंपेटेबल हैं? मेरा सवाल ये है कि आगे की जो योजना है वो क्या है? क्या पेट्रोल के बाद अब डीजल में भी आइसो ब्यूटानॉल ब्लेंडिंग की तैयारी है कि डीजल में भी ब्लेंड करने वाले हैं? मधुरेंद्र, मैं न्यूज स्टेशन से। जिस तरह से पेट्रोल पंप पे हमारे पास विकल्प दिखाई देते हैं कि ये एथनॉल बेस्ड पेट्रोल है, ये टर्बो है, ये पावर है, क्या 100% पेट्रोल जो पहले मिलता था उसका विकल्प नहीं दिया जा सकता? क्या इंडस्ट्री इस पर नहीं सोच रही? मेरा दूसरा सवाल है। Can you repeat the question? Yeah, I could repeat the question. I am saying that there are lots of possible fuel available on the petrol pump, जैसे टर्बो है, पावर है, and what we are talking about the ethanol based. तो जैसे पहले 100% पेट्रोल मिलता था, क्या उसका विकल्प नहीं दिया जा सकता ताकि जो कंज्यूमर है वो अपने हिसाब से, अपने और गाड़ी के हिसाब से इस चीज को प्रेफर कर पाए कि हम जो बेहतर पेट्रोल है वो यूज कर पाए? और मेरा दूसरा सवाल है कि हम जिस विषय पे बातचीत कर रहे हैं, क्या इंडस्ट्री ने कोई रिसर्च किया है, कोई डाटा अवेलेबल है और उस डाटा का सैंपल साइज अवेलेबल है ताकि आम लोग ये आसानी से समझ सकें कि उनकी गाड़ियों का जो सैंपल साइज है, रिसर्च है, डाटा है, वो क्या कहता है? One last question, 209. I wanted to understand whether industry experts as well as the ministry is planning a larger outreach as far as people are concerned, because every other day there are larger concerns regarding the entire blending process of ethanol itself. So how accessible can the industry make this chemical process to end users as well, for them to also automatically verify any such claims that then appear in media or through social media reports? Thank you. We will begin with the answers. We'll begin with Rahul. We'll begin with you first. Thanks for a lot of very honest, upfront, frank questions, and we'll address them with equal openness. First of all, there were three questions on usage of usage of E20 fuel on E10 cars. Let me tell you, at least Maruti Suzuki has, we've had at least 15 years, more than 15 years, where we've had E10 in the market. And if you use E20 fuel on these E10 cars, we have tested it internally. There is a separate test by ARAI. Maybe Gulati-san is more aware of that ARAI test, but internally within Maruti test, we have not found anything of concern. There is a second question on customer complaints and social media messages. E20 was mandated in 2023. Well, 2 years after that, in the financial year 25-26, and we have Maruti Suzuki has an extensive service network. We serviced 2.48 crore cars. 2.84 crore cars. Out of that, 1.5 crore cars, more than 1.5 crore cars were more than 3 years old, which means they were not certified E20. And we have not found anything of concern related to E20 fuel usage on that. So, sorry? No, I'm coming to damage. Mileage, I'll address separately. I'm talking about corrosion, wear and tear, damage, concern on the life of the parts, etc. So, to answer your question, this is what gives us confidence. 1.5 crore cars over the past 15 years from our entire service network, and we have not found anything of concern. So apart from the testing that we do in our labs and in our R&D, the field experience has also been fine. That this is what gives us the confidence to tell our customers that there is no problem. One, there was a question on mileage. Yes. We are all aware that the energy content or the calorific value of
E20 versus E10 is slightly lesser. So it's less by about 3 to 3.5%. To that extent, the mileage is less. It is accepted. However, the advantage with ethanol fuel is that you can have a higher RON. Fortunately, the government has also notified a higher RON of octane number of 95, which allows us to design engines with higher compression ratio, with higher low end torque, etc. So both the drivability parameters and the fuel efficiency or mileage parameters can go up. But that can 3 to 3.5% between that, because of the calorific value of the energy content in the car, in the fuel. So, however, let me tell you that let's say a car average mileage is about 20 kilometers per liter. 3% is roughly 0.6. As a separate mention, may I tell you that many other parameters like tire pressure, like driving pattern, like ride gear, like maintenance of the car, high acceleration, high braking, these have much more variation. These bring much more variation to the car mileage than this minuscule factor. Having said that, in the future, since the government has notified a higher octane number, it gives the opportunity to car manufacturers to design engines with higher compression ratio and partially recover the loss in mileage. But that's in the future. We are talking about today an impact of about 3 to 3.5% from E10 to E20. There was one question which said that today you are E20 compliant, and if you have a higher factor of safety, then please inform us. The positive part is that yes, today when we are giving a car of E20 into the market starting 2023 for material compliance and 25 for engine compliance, we internally have a much higher factor of safety. We are absolutely comfortable if the blending goes up by some points. As of now, we have not taken a call which is that point, because there are several variations, several factors of safety. There's a design factor of safety, production factor of safety, usage factors of safety. So we have to select that and we can give a statement. But when we give an E20 car, it is compatible for much more. That confidence we have. Wait. That is what we are not able to. Sorry, you want to? Okay. That is what we have not taken a call. How much can we clearly claim and stand by that claim? But internally, we have a much more factor of safety on that. Then again, petrol tank, and that's part of the same system. So it has been designed to take care of that. That I believe is over to you. We will do that. Achha. Okay. I'll repeat it in Hindi. I just want to. Gulati ji kar do. I'll come. One by one, please. One by one. Yeah. We have not sold. We have we've had several possible solutions available with us. As of now, we don't feel the need, and there is no such kit that we are offering in the market, only for R&D purpose. So first, I will address a question that was directly posed to me with regard to a particular video on the social media relating to a high-cross vehicle.
We have investigated the matter. The issue pertained to fuel that was not standard and was, had issues with it. It was it was not the standard E20 fuel. It had some impurities and water content, etc. in it. So, as is the standard protocol, we have serviced the vehicle. We have flushed the fuel tank and the fuel line, removed the non-standard E20 fuel which was there earlier, which was basically seemed to be adulterated. This fuel was removed, the tank and the fuel lines were cleaned. The vehicle was refilled with standard E20 fuel. There was no damage to any of the parts. The vehicle was tested and ran normally, and it has been given back to the individual. That vehicle actually is a E20 compliant vehicle. So that issue has got nothing to do with E20 at all. So that's first one. Second, I think there was a question relating to ARAI. It's a auto companies funded by auto companies, and government is also there on the governing board. Just like to mention that testing is not just, the protocols are not just set in India. These protocols are rigorous. We are party to UNECE, which is an international body. There is a set standard approved testing procedure which has to be followed meticulously. There is also a mechanism by which accreditation is given to each of the testing agencies. These testing agencies are not only testing vehicles for India, they're also testing vehicles which are exported. They also take part in witness testing for vehicles globally. So they are globally compliant, top of the line, very advanced testing agencies which follow standard strong protocols which cannot be compromised. So irrespective of the structure of ARAI, so just like to assure you that that is not really an issue to be concerned about. There was some talk about, now that we've done E20, what will follow? Are we talking about going to E25? Partly it was addressed by Rahul ji. The fact of the matter is that, government in the past, when it decided to go into E20, it had done very rigorous testing involving ARAI and other stakeholders, also the automotive sector, which provided the older vehicles, and this was tested. It was only after the rigorous testing was done and it was found that there is no issue, was the decision taken in 21 by the committee to go in for a E20 shift, ensuring that the ecosystem was also ready. And I think there was some mention about, storage capacity compliant to E20, etc., ethanol. So making sure everything is in place. Similarly, the way ahead will be decided based upon similar rigorous activity that is necessary. In addition, very recently, the government has launched E85 dispensing stations. This is ethanol with 85%. This is basically designed for flex fuel vehicles. Now, flex fuel vehicles are designed to take any mix of ethanol. This E85 is not meant for regular vehicles. So it is a step in the direction, clear direction of the government to move towards a future which has flex fuel vehicles. This is what the entire stakeholders, whether it is the OEMs or the other people in the stakeholders, including the government, feels that is the right way to go. Because with flex fuel vehicles, you can have any mix of ethanol. The vehicle is so designed materially and otherwise to take any mix of ethanol that you can give. So it gives immense freedom in terms of location, whether you get E20 or E100 or E85. And you also get taken care of the ethanol availability because of seasonality, etc. So with E85 now dispensing stations coming up, with incentivized, lower pricing of E85 that has been put in place, the direction seems to be clearly that going forward, excess ethanol that is currently available in the market
would be consumed through flex fuel vehicles, and whether the base monofuel needs to be increased or not, I think that will be done only after following the same protocol which was followed earlier. And incidentally, if you look at the global perspective, Brazil is a case in example. They've had E22 and E100 with flex fuel. They then had E27 and flex fuel. Now they've migrated to E35, I think, or E33 with flex fuel vehicles. And this is happening over a phased program and looking at the ecosystem and the readiness. Then issue of mileage and all has already been addressed. There was also a question relating to isobutanol. I don't think there is right now anything happening. It's again, same story of testing and being confident. Please note that whether in the past or now in the future, it is consciously what is being done is to make sure that there is confidence in terms of the entire ecosystem and rigorous testing is done so that the entire ecosystem is confident that you can roll out very, without a hitch. As far as complaints, etc. is concerned, we've received no such complaints so far. Of course, only some cases of, fuel being adulterated, which was earlier there also, which will be now also remains, and this needs to be addressed. It happens in an isolated manner. It's nothing particular to E20. Then there was also a point about has industry research E20. Well, you see, it's not just testing and homologation and certification that is done by the testing agencies. Before that, each one of the OEMs, whether two-wheeler or four-wheelers, at the design stage, at the stage of searching for materials, etc., makes sure and tests during the development cycle that the vehicle is able to meet all the requirements. So that's a first level. Second level is when you go to a independent testing agency and get it tested, certified, and homologated. So like what was shared by my colleague, Mr. Rahul, in all because the rigor of norms being applied to automotive sector are so stringent that all OEMs do keep a buffer. Now, somebody asked, can you tell what is the level that you can go to? Well, one thing is certain, there is buffer, as there was buffer in E10, which allowed us to say confidently, which was also shown by the testing that was done by independent agency ARAI, that there would be no impact. But have we done any testing independently to determine what is that number? No, as of now, that has not been done. Thank you. Thank you, Gulati ji. Bharti ji से request है एक बार हिंदी में. Which all questions? So I'll just address 1-2 questions, then we can. So जैसे कि आप सब ने कहा कि आप हिंदी में बात करना चाहते हैं, तो मैं कुछ प्रश्नों के जवाब हिंदी में दूंगा. So पहले तो मेरे एक मित्र ने यहाँ पर पूछा था कि ये XP95 कुछ लोगों को नहीं मिल रहा, तो उसके बारे में. तो अगर आप देखें कि फिलहाल ही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अभी एक प्रवृत्ति जारी की थी, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि अभी जितने भी हमारे E20 फ्यूल मिल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, वो ऑलरेडी रॉन 95 कंप्लाइंट है. तो अभी भारत में जितना फ्यूल आपका आ रहा है वो सारा रॉन 95 का है. तो जो एप्रीहेंशन है कि हमारे फ्यूल की जो क्वालिटी है या ऑक्टेन रेटिंग है वो 93 या 92 के आसपास है, वो अब गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी है. दूसरा, आई थिंक यहाँ पर मेरे मित्र ने पूछा था कि अभी तक आपके सोशल मीडिया पे कितने ऐसे इश्यूज आए हैं. तो जैसे कि नाम आपको पता है, सोशल मीडिया ही है, बट टेक्निकली स्पीकिंग, बिकॉज देखिए हम एक सारे के सारे यहाँ पर जो ऑटोमोटिव ओईएम्स हैं, रिस्पॉन्सिबल ओईएम्स हैं, हर गाड़ी के साथ हमारी एक कमिटमेंट है कस्टमर को, चाहे वारंटी की हो या आफ्टर मार्केट की सर्विस की हो या इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स कंप्लायंस हो. तो हमारा जो कमिटमेंट है वो कायम है. मतलब नॉर्मल वारंटी की बात करें हम तो लोग एक्सटेंडेड वारंटी 2 साल 4 साल 7 साल तक की वारंटी भी देते हैं, एंड ऑन दैट कमिटमेंट वी आर ऑलरेडी अवेलेबल फॉर एनी कस्टमर. तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे पास ऐसे सोशल मीडिया में कोई इतने ग्लेयरिंग इश्यूज नहीं आए जिसके कारण हमको सोचने पड़े कि ये जो सरकार ने एक कदम उठाया है भारतवर्ष के लिए, उसमें हमको किसी तरह से दोबारा से सोचना पड़े या नहीं. हाँ जी, नहीं, ये तो आप लोगों के प्यार से, हम आपके लोगों के प्यार के लिए आए हैं.
अच्छा, तीसरा प्रश्न शायद प्रभुदत्त जी मेरे मित्र यहाँ पर बैठे, उन्होंने पूछा था कि अगर ऐसी बात है तो हम E100 की तरफ क्यों नहीं चले जाते। तो जैसा शायद गुलाटी साहब ने इसको जवाब भी दिया है कि अभी फिलहाल ही भारत में E85 फ्यूल का भी जो प्रावधान है वो भी शुरू कर दिया, कुछ 400 के आसपास के स्टेशन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने शुरू किए हैं। तो देखिए हर एक चीज की जो एक टाइम है, इट टेक्स टाइम फॉर ऑल ओवर इंडिया सच थिंग्स टू कम। और जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है, देखिए एक जो मिथ्या है हमारी कि ये E20 और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल ये दोनों डिफरेंट है। फ्लेक्स फ्यूल समझ लीजिए कि एक फ्यूचर मॉडल है जिसमें कस्टमर जो है वो किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके किसी भी रेंज का, चाहे वो E10 हो या E20 हो, E25 हो, E27 हो, E30 हो, E35 हो, E85 हो या मे बी E800 हो, किसी भी तरह का फ्यूल वो डाल सकता है, क्योंकि उसके जो इंजन के पार्ट्स होंगे, जो उसकी टेक्नोलॉजी होगी, वो हर तरह के फ्यूल को लेने में सक्षम होगी। जहां तक बात है अभी तक E20 की, जो मटेरियल कंप्लाइंट 23 में हुआ और उसके बाद इंजन कंप्लाइंट 25 में हुआ, वो जो इंजन है उसमें कुछ ऐसी फेरबदल की गई ताकि वो E20 तक के इथेनॉल को सहन कर सके और जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी गैसशीलता है, उसको वो अपने साथ चला सके। तो ये हमारा जो था वो इसके बारे में था। बाकी आई थिंक इन टर्म्स ऑफ करोजन, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बिकॉज जैसा कि बताया कि वो 2021 में ARA की रिपोर्ट थी जिसमें 2021 में ये टेस्ट किए गए थे, 2023 में जाके इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो 2 साल पहले ही इन चीजों को टेस्ट किया गया था। हर एक OEM ने अपनी गाड़ियां भी थी, ARA इसलिए क्योंकि एक टेक्निकल बॉडी है, उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, वो हर एक चीज का नॉट ओनली फॉर इंडिया, वो होमोलोगेशन बाहर के लिए भी करते हैं, एक्सपोर्ट के लिए भी होमोलोगेशन करते हैं। तो इसलिए थ्रू ARI उन सब गाड़ियों को टेस्ट किया गया और उसकी प्रवृत्ता के बाद ही 2023 में मटेरियल कंप्लाइंट और 2025 में इंजन कंप्लाइंट गाड़ियां दी गई। तो कुल मिला के हम सिर्फ ये आपको कहना चाहते हैं कि हाँ, भारत देश बहुत बड़ा देश है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की फ्यूल की क्वालिटीज हैं, बट हमारी जो कमिटमेंट, हमारा जो अपना दावा, जो हमारा एक अपने कस्टमर की तरफ हमारा कॉन्फिडेंस है, वो हमेशा रहेगा। और आज कोई भी कस्टमर किसी भी तरह का इशू हो, वी आर ऑलवेज देयर, चाहे उनका कोई गाड़ी के रिलेटेड इशू है, सर्विस के रिलेटेड इशू है, प्रोडक्ट के रिलेटेड इशू है या कंप्लायंस के रिलेटेड इशू है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर दैट। सो दीज आर सम एडिशनल पॉइंट्स जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये आई थिंक EIL इंजीनियर See the जो specifications हैं E20 के और BS6 गैसोलीन के, उसमें केवल जो एथनॉल की वजह से ऑक्टेन बढ़ी है हमारी, उसमें चेंज है। बाकी सल्फर हो, वाटर कंटेंट हो, गम कंटेंट हो, डिस्टिलेशन हो और बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो समान हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये कहना कि E20 हमने जब 20% उसमें एथनॉल डाला गैसोलीन में, तो उससे जो है वो पानी का उसमें कंटेंट बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यदि हम डीजल इंजन देखें या गैसोलीन इंजन देखें, जो तो टैंक की डिज़ाइन है, और OEMs को भी पता है, वो टैंक की डिज़ाइन ऐसी है कि वाटर उसमें इनग्रेस नहीं हो सकता है। और अगर आप जानते हैं, आप खुद गाड़ियां चलाते हैं, अगर वाटर इनग्रेस गाड़ी में होता है तो इंजन ठीक से चलता नहीं है ना, रुक रुक। तो ऐसा तो आपको भी देखा होगा आपने, ऐसा कोई भी जब पूरे देश में दिसंबर 25 से E20 है, हर व्हीकल में जा रहा है जो गैसोलीन व्हीकल है, तो अगर इस तरह की इशू होती तो आपको कई गाड़ियां दिखती रोड पे जो प्रॉब्लम में आ रही हैं। ऐसा तो कुछ किसी को भी एविडेंस में नहीं आया। एक 47 कोई पूछना चाह रहे हैं? हाँ बताइए। ओके, we'll take the questions here. पुनीत सर और गुलाटी सर ने जो कहा, क्योंकि जैसे हमने पटना वाले बिहार वाले केस में देखा कि गुलाटी सर कह रहे हैं कि उस गाड़ी में खराब क्वालिटी का तेल भरा गया, इस वजह से इंजन में खराबी आई। एंड पुनीत सर कह रहे हैं कि हम कस्टमर के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। अगर कस्टमर ने खराब क्वालिटी का तेल भराया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जो कस्टमर, क्योंकि ये भी देखा गया कि तमाम डीलर्स पर मिलावट वाला तेल मिल रहा है, तो नुकसान तो कस्टमर का हो रहा है, क्योंकि कंपनी ने तो कह दिया कि गलती कस्टमर की है। तो खराब तेल ना मिले ये सुनिश्चित कैसे होगा? मेरा नाम मानव है, रिपब्लिक मीडिया से। इसमें जो मैं पहले बताना चाहूँगा कि ये कंटेमिनेटेड फ्यूल था, ये E20 के आने के बाद कंटेमिनेशन शुरू नहीं हुई है। आपका कहना सही है कि कस्टमर्स को
टोटल अच्छे क्वालिटी का स्पेसिफिकेशन के हिसाब का फ्यूल मिलना चाहिए, बट इट इज ऑल्सो रियलिटी कि कुछ आइसोलेटेड जगह पे there is incidence of people contaminating the fuel, which is not correct. And I'm sure on behalf, although we don't have anybody from the oil industry right now, but I'm sure the oil industry is actively looking at this and trying to address this problem, which was there earlier also. The sole point that I made was, as in the past, since in the earlier time when E10 was there, if you had contamination, you had a problem. Here also, this is a case of contamination, which was sorted out. And as I mentioned, fortunately, there was no damage to any part or the vehicle, only the flushing was done. The vehicle was then handed back after making sure that we gave a standard, standard specified E20 fuel. Okay, 49 and then two front, yes, 194 supplementaries. मेरा नाम अमित भारद्वाज है। गुलाटी सर से मेरा सवाल है, आपने पहले जवाब में कहा था कि अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है E20 को लेके, और जो कंप्लेंट्स हैं वो अडल्टरेटेड फ्यूल को लेके है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश भर में इतना ज्यादा जो कंसर्न कस्टमर्स एक्सप्रेस कर रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जिसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं बाय द वे सर, क्योंकि सोशल मीडिया पे है, उनके पास वही एक प्लेटफॉर्म है अपनी सवाल को रखने का, तो क्या आप कह रहे हैं कि लार्ज स्केल देश भर में अडल्टरेटेड फ्यूल मिल रहा है कस्टमर्स को, जिसकी वजह से ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे, या वहां पे कोई और इशू है जो अभी तक ओईएम्स नहीं देख पाए हैं या जो ओएमसीज हैं वो नहीं देख पाए? मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, एक स्पेसिफिक वन इशू था ऑफ अ पर्टिकुलर व्हीकल, जिसका मैंने जवाब दिया है। और मैंने साथ में ये भी कहा है, हमारे पास ऐसे अन्य केसेस बहुत नहीं आए हैं। राहुल जी ने भी ये कहा कि वी आर नॉट गेटिंग सच केसेस। सो आई थिंक दैट क्लियरली स्पेसिफाइज कि जो आप कह रहे हैं, व्हाट यू आर ट्राइंग टू इन्फर इज नॉट करेक्ट। थैंक यू। ओके, आप इनको भी इतना सारा कंसर्न आ रहा है, चाहे हम माने ना माने, if we say that everyone is lying, then that will also be not right. तो क्या आप लोग कभी, क्योंकि आप सब आज खाली ऑटोमोबाइल बैठे हैं, कल हो सकता है पेट्रोलियम वालों को भी सरकार भेजे बताने के लिए, तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या आप लोग सरकार से कोई प्रपोजल ऐसे दे रहे हैं कि एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10 years or 15 years let the fuel be at E20 so that any other mandatory upgradation happens only after so that people don't get confused. जैसे मैं कल गाड़ी खरीदूंगा, मुझे ये ना डर रहे कि मैं अभी E20 का गाड़ी ले लिया और 3 दिन के बाद 5 दिन बाद आपने अचानक कह दिया कि E23 भी लागू हो जाएगा। क्या, क्योंकि आई थिंक इट्स ए कंसर्न फॉर इंडस्ट्री ऑल्सो। आपके कस्टमर जो लोग हैं जो गाली दे रहे हैं, उनको तो आप कुछ करने के लिए सरकार को बोलेंगे? आई एम जस्ट आस्किंग, आर यू प्लानिंग लाइक दैट? ओके, वी विल हैव द आंसर फर्स्ट, देन जैसे कि मैंने बताया कि जो आईएमसी है और जो ऑटो इंडस्ट्री है, अलोंग विद अदर स्टेक होल्डर्स जो हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, क्लियरली एक जो स्पष्ट रिक्वेस्ट है फॉर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, और ये चीज आगे भी लेके जा रही है जो कि विजिबल है। सो अगर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जैसे आएंगे और कुछ ओईएम्स ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, तो ये एक ग्लोबली कंपैटिबल पाथवे होगा, जिससे मतलब काफी फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी आएगी। और यही चीज आई थिंक गवर्नमेंट से डिस्कस की जा रही है, एंड गवर्नमेंट इज आल्सो मूविंग इन दैट डायरेक्शन। वुड यू वांट टू सप्लीमेंट? सो मैं एक आश्वासन आप सबको ये देना चाहती हूँ कि जो भी हमने प्रोग्रेस किया है फ्यूल के ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए, इसकी जो नींव थी वो बहुत पहले ऑटो फ्यूल पॉलिसी विजन से शुरुआत हुई थी, और उसमें फिर हमने BS4 किया जो कि यूरो 4 से कंप्लायंट था, और उसके बाद हमारे देश ने ये सोचा कि BS5 करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे हम BS6 पे चले जाते हैं, जिसमें 10 ppm सल्फर है, जो कि बेसिकली टेल पाइप एमिशंस को कंट्रोल करता है, जिससे कि पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स, ये सब नियंत्रित हो और पोल्यूशन को कम किया जाए। तो हम सीधे BS4 से BS6 चले गए। अब ये BS4 और BS6 कोई हमारी अपनी केवल अपनी उपज नहीं है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करती है। जैसे मेरे कोलीग्स ने यहाँ कहा
कि जो भी हम टेस्टिंग करते हैं वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, इन सब से कंप्लायंट है। आप सबको पता है कि हमारा देश जो सबसे बड़ा एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, ये एकदम अलग हट के अपने स्टैंडर्ड्स तो बना नहीं सकता। दोनों ऑटोमोटिव सेक्टर और ऑयल सेक्टर दोनों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ऑयल सेक्टर करीब 45 से 50 मिलियन टन पेट्रोल और गैसोलीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक्सपोर्ट करता है, और ऑटोमोटिव सेक्टर भी अपनी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल्स एक्सपोर्ट करते हैं। जब ये एक्सपोर्ट करते हैं, इनके बिहाफ में ये ज़्यादा एक्सपर्टीज आपको दे पाएंगे। इनकी एक स्टैंडर्ड होती है रेफरेंस फ्यूल की, जिससे इंजन टेस्टिंग होती है, और ये E20 में भी बनाई गई रेफरेंस फ्यूल। इसका भी एक स्टैंडर्ड BIS ने डेवलप किया, जिसके बेसिस में ARI ने उसको टेस्ट किया। और आप रिपोर्ट के जो बात कर रहे थे, ARI रिपोर्ट, वो भी 2021 की रिपोर्ट है, 21 दिसंबर की है मेरे अनुमान से। वो पब्लिकली अवेलेबल भी है। आप अगर उसमें लॉग इन करें और ID बनाएं, तो मे बी उसमें आपको कोई एक्सेस हो, कोई मे बी, बट एक जो एक टेस्टिंग हुई है उसकी प्रोटोकॉल के अनुसार। सो E20 का जो मैंडेट है वो आप देश के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो एक लो हैंगिंग फ्रूट है हमारे लिए, जिसमें इंजन टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग होके कंप्लायंस होके लॉन्च किया गया है। आगे जो आप रोड मैप E85 या E27 का जो हम बात कर रहे हैं, वो अभी आगे आएगा। इट इज नॉट गोइंग टू कम इमीडिएटली। E27 का कोई E85 नहीं, सो इट वो सब स्टेप बाय स्टेप आएगा। इट इज नॉट दैट ये आज रेडीनेस में है, कल बिना कोई डिस्कशन के लॉन्च हो जाएगा। Just want to supplement, basically right now as I mentioned, E85 और E100 की जो नोटिफिकेशन अभी निकली है वो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए निकली है, नॉट फॉर रेगुलर व्हीकल्स। और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स अभी मार्केट में आनी शुरू हो रही हैं। कुछ 2 व्हीलर्स आए हैं, कुछ 4 व्हीलर आया है, और सारी इंडस्ट्री ने जैसे कि गवर्नमेंट से वार्तालाप हुआ था उसमें कमिट किया है कि वो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स लाएंगे। एक पॉइंट जो मेरे ख्याल से छूट रहा है चींटियों का, उसको बस स्पष्ट कर देता हूँ कि जो डिस्टिलेशन एंड प्रोसेसिंग होता है उससे जो भी रेजिड्यूल शुगर्स वगैरह होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। क्योंकि 80% इसमें पेट्रोल रहता है तो पेट्रोल ऑर्डर काफी स्ट्रांग रहता है। तो ये जो एक इशू है ये डेफिनेटली एक मिथ है। Okay, thank you friends. Thank you of not the officers, the guests on the dais. Thank you everyone. Thank you.